Hi friends, greetings from STMIC classes. My advice, nothing is impossible for a brave and hardworking person with a willing mind. We continue with the chapter 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. This is part 6 video, this is the 6th class. Hope you must have watched the previous 5 classes. I believe you all must have understood. Now I request you all to pay attention. Let's start. We will discuss and learn some important adjustments in this class. Where and which account to take it, trading item or profit and loss account item or balance sheet item. We have to discuss the adjustments. See, there are some adjustment entries coming now after preparing the balance sheet. After doing that, bookkeeping means the journal entries and register entries and posting. The year end we will take it extract the trial balance. The first trial balance will be prepared, and after that there are some adjustments coming, and that adjustment entries are called adjustments. That some of the important adjustments we will go through, and we have to find out that which account to take it, and whether it is to be taken to the trading item or a profit and loss account item or a balance sheet item. Why trading and profit and loss account should be taken separately? Because if it is if any item taken into the profit and loss account part, then the GP will be affected. And if it is taking on the trading item, profit and loss account and taken into the trading account, again the GP will get affected. So we have to take that, means whether it is a trading item or a profit and loss account item or a balance sheet item. So now we have to find out, means whether it is to be debited or credited, and which account to debit and which account to credit. Whether to debit or credit trading profit or loss account, whether it is a balance sheet item and what effect to give, whether it is to be taken to the asset side or liability side. So we have to find out that. Now I will explain through our PDF file, and then with some explanations, or I will work out and now. These adjustments we have already seen that the important adjustments. Every item in the trial balance must be shown only one time. See, when the first trial balance will be extracted in the trial balance, other item should be taken only one time, one place only. Whereas in just one part of the final accounts, excluding silent non-hidden items, every adjustment must have to take give two effects. If it is not passed through the registers or through the means the general entries to the paper, then again extract the trial balance, then there won't be any problem. But if it is if the first trial balance is taken and the entries are means passing afterwards, means after making the balance sheet, then this when each and every adjustment must be given two effects, one debit effect and the other credit effect. So this already means in 11th standard we already discussed in final account of proprietary concern. Um, Most of the things are similar, means that trading profit and loss account and balance sheet items are similar, except the capital of the proprietor and capital of the partners, and that is some places there will be some difference. Otherwise, almost everything is the same similar type, similar only. So if there is any doubt, you can go to the 11th standard textbook and read, or I have my mentioned this 11th standard classes videos uploaded. You can refer that also. The final accounts of property concern. You will get a clear picture. Now let us start with some 22 items we will see here in this thing, and some hidden adjustments of some 7 items. So this we will see. So let us see how much we will just we can take in this class, and then we will continue the other class. I will make you to make understand how to give the effects. So once you learn this, this is very. Then once you learn and make a base strong, then it will be very easy to just even if you go to for a CA or ICW or any other classes, it will be very helpful to you. So just focus on this.
So these are the very important adjustments you have to understand. You have to understand. Okay, let's start with the closing stock. When the closing stock is given, closing stock entry, that closing stock will not appear in the trial balance. So closing stock will be taken out when that at the end of the year or any particular, suppose after 6 months or 30 quarterly or half yearly or annually. Most of the small organization that the stock taking will be taken at the year end. A very large organization maybe means taking monthly or and quarterly or half yearly. So, but all these small organizations or medium concerns also take once in a year stock taking. So stock taking, they make a list of the entire items what is there, and take the stock and physically verify with that along with the book stock register. That extract will be taken, and then that will be compared with the physical stock, whether that item shown in the closing stock of the means the stock register is tallying with matching, exactly matching with the stock appearing, means there is a physical stock verification, physically it is there. So that is called stock taking. So when once the stock taking is taken, the value will be taken as per the historical cost or cost of purchase. So then this will be compared with the means of the market value or the closing stock, means that the purchase value, means it's the cost of acquisition. So once if it is a that we will discuss later, because that is again going to come. So now that we will just see what the effect should be given, and when we arrive at the figure, means what is the total amount of the closing stock, that entry, where for example I will show you um, so closing stock. So after taking the closing stock, a number of things will this will be given. So we'll see. Closing stock. Suppose if it is a 50,000 closing stock is got, means roughly around I'm telling you, means this is as per, means suppose for example if it is a any item 1, 2, 3, 4, 5, see like that now. So there are so many items. For example, if it is a provision store, if you say that, means for example wheat, like that, means that there are so many things, rice, like so many items now that that way it is. So I'm just taking a total of this. The total comes to a 50,000 rupees on June. This is the closing stock taken at the end of the year. So now this 50,000, the closing stock, where the effect should be given. The effect should be given first in the trading account uh, by closing stock 50,000. And this is the effect given. So the first effect will be given in the closing stock. We will be given in the trading account. But when we discuss this here, there are the fixed assets, means this non-current assets, fixed assets, current assets. Now closing stock will be taken in the balance sheet. Closing stock will be taken here 50,000. So the first effect, closing stock, means in the balance sheet, asset side. See, this is asset side. Let's see, this is asset side and this is liability side. Okay, so now where we have taken in the closing stock, in the balance sheet it is given, the asset side 50,000, and the second effect is given in the closing stock P&L account, means the trading account. ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो 50,000 क्रेडिट किया एंड इधर बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड में लिया. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट. Let's see closing stock, first effect given the balance sheet asset side, and second effect given the trading account credit side. You got it, no? See, trading account the balance sheet में asset side में दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में किया, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट ये साइड में किया. See, there are two part. This is trading part, trading, and this is profit and loss account part.
I'll just for your just to clear your doubt, I will just write here TRADI trading account, and here we will take. We will not write here actually, but for your clear picture, I am just writing here. It is not need to write the profit and loss account. This part is the upper part is called this trading account, and this lower part is called profit and loss account. So it need not to be written here, but it's totally commonly called a trading profit and loss account. For your clarification, I am just giving it here. So now, what I am telling you, see, so this a trading account is prepared to find out the GP. GP means gross profit, gross profit, and profit and loss account is prepared for find out the net profit. After all expenditure, we will get a net profit. Okay, so here it is the direct income minus direct expenditure. So the GP will come, and this is all means that gross profit with other incomes and all indirect expenditure minus करने के बाद में that we will get a gross net profit. So now we have to see let's see that stock closing stock effect is given here. Trading account trading part we have given 50,000 credit, and asset side it is given closing stock 50,000 asset side we have taken. So both the effects are given. You understood now. The closing stock effect is given two effects. One trading account the credit side, and the balance sheet asset side. So two effects is given. Second point is outstanding expenditure. So what is outstanding expenditure? Outstanding expenditure is an expenditure uh, that that is already incurred but not paid. That is called outstanding expenditure. An expenditure already incurred but not paid. It will be paid later. For example, at the end of 31st March, must have some expenditure done, but the payment is made will be made in the month of April, means later. So that, but since the expenditure is already incurred, that should be booked into the account. We have to record into that. We have to give the effect to the profit and loss account or trading account, and then the payment will be done in the next year, next accounting year. So we will see that outstanding is one example we will see, so that it will be clear. So now the first effect is add to the particular expense account on the debit side of the trading profit and loss account, and the second effect will be given balance sheet liability side. Since that expenditure is payable, expenditure is already incurred, but that amount should be payable later. So it's a liability. Now we'll see. I will show you means an entry. Um, Second, outstanding expenses. Example. I will show you salary. Salary. Salary for the month of 31st March. 31st March means first March to 31st March. Salary will be paid. Salary will be paid on 7th April of next year. For example, this is of 2021. So this will be made on 7th of 2020, 21. ये 2022 का ये हो गया, तो सैलरी कभी पेमेंट करेगा 7 तारीख अप्रैल को. सो दिस इज अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, राइट? सो द अकाउंटिंग पीरियड इज अकाउंटिंग पीरियड accounting year financial year. Accounting year means financial year is 1st April to 31st March, right? So now this here it is started 1st April 2021 to 31st March
2022, right? So now so for the first last month का मार्च का जो expenditure जो है um, salary का expenditure, there are several things can come in, like this, like for example any T bill payable, electricity bill payable, mobile bill, yeah, telephone bill payable, like that. No, means the end of the March means the bill will be receiving later. So you know, means that means the electricity bill comes 7th, 8th, or 10th of that next month. So this bill we have to means that amount that we have to book because that expenditure belongs to the previous year. So payment will be paid next year, right? No, the current year का जो expenditure जो है, current year का जो expenditure है, for example telephone electric bill है, electricity power bill या electricity bill, वो electricity bill or electricity used for that particular current year, but will be paid in the next year. So उसका जो whatever is the effect should be given in the current year. Though the bill payment will be made next year, next accounting year, that type of expenditure is called outstanding expenditure. अभी ये जो सैलरी का है, सैलरी फर्स्ट मार्च से लेकर 31 मार्च जो लास्ट मंथ का जो सैलरी है, उस दैट सैलरी विल बी पेड ऑन 7th or 5th. Some people may be giving on 1st of April, or some may be giving on 7th of 5th of April, say 5th of April. Some may be given on 7th of April, like that. Now it is. So this particular salary, for example, 1 लाख का जो सैलरी है, ये जो 1 लाख का जो सैलरी है, टोटल जो सैलरी जो पेबल है, जो 10 एम्प्लॉई है या 5 एम्प्लॉई है या कितना भी है, या 50 एम्प्लॉई है, तो 5 लाख रहेगा समझो, फॉर एग्जाम्पल से एग्जाम्पल जो 6 लाख उसका सैलरी देने का है, मीन्स जो टोटल सैलरी आ गया एक मार्च का 6 लाख. तो ये जो 6 लाख का सैलरी ऑलरेडी इनकर हो चुका है, एक्सपेंडिचर हो चुका है, so that expenditure should be booked. That means the effect should be given into the profit and loss account, right? So that's then the next next effect should be given to the balance sheet outstanding expenses. Okay, so two effects where we are giving the effects I will show you. So it will be very clear. Now we see, since for the 11 months April to what फरवरी तक का जो है, सो अप्रैल टू फरवरी तक का जो 11 महीने का ऑलरेडी मीन्स हम लोग ने बुकिंग हो गया है, पेमेंट भी हो चुका है, सब कुछ हो गया है, वो तो अपने को लेजर से मिल गया है, तो टोटल. और जो ये जो है इसका एंट्री करके, यानी तो इसका जो ये दिया नहीं तो 12 महीने का सैलरी होना चाहिए, तो दिस इज द 12th मंथ सैलरी. So that should be added to the profit and loss account, means that particular item. For example salary में जो है here for example profit and loss account में लेगा सैलरी, समझो ये है, समझो जो 45 lakhs का सैलरी हो गया, समझो 45 lakhs का सैलरी हो गया. So this is already salary paid. Now add outstanding expenditure, means outstanding salary. What was it? 6 lakhs, right? 6 lakhs. So 6 lakhs. So now this total will come into the outer column like this for 51 lakhs total salary. तो ये जो 6 लाख का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको कहाँ लेंगे हम लोग? दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट वी हैव गिवन. सेकंड इफेक्ट हम लोग दे देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में. दिस इज करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, वो 6 लाख हम लोग यहाँ ले लेंगे, राइट. सो देखो अभी दोनों इफेक्ट दे दिया है. वन ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम लोग ने जो अभी यहाँ जो बताया है, ऐड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट ऐड किया है, ठीक है. देन on the debit side of the profit and trading or profit and loss account, and then second effect will be given outstanding liabilities
आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी में इधर ये जो लायबिलिटी साइड में ले लिया, तो दो इफेक्ट हो गया. नाउ यू अंडरस्टूड थिंग, आई थिंक it is clear. The third adjustment we will see prepaid expenses. Let's see prepaid expenses. What is a prepaid expense? Prepaid expenditure is an advance payment towards any expenditure. Okay, like means for example, expenditure already outstanding expenses में expenditure already incur हो चुका है लेकिन payment नहीं किया है. Just opposite prepaid expenses, उसका just opposite. एक्सपेंसेस हुआ नहीं है लेकिन हम लोगों ने एडवांस में पेमेंट किया, कंपनी ने एडवांस में जो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है एडवांस में पेमेंट किया, तो वो जो एडवांस में भी जो पेमेंट किया है उसको उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस हुआ नहीं है, उसको पहले ही पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड अ प्रीपेड एक्सपेंडिचर. तो उसका इफेक्ट कैसा होगा? डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट असेट साइड. तो क्या करने का है? पहला हम लोग ने जो आउटस्टैंडिंग ऐड किया था इसको जस्ट सीधा ये उल्टा हो गया, डिडक्ट करके जो पर्टिकुलर एक्सपेंस में से डिडक्ट करके जो डेबिट साइड में से डिडक्ट करके डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डिडक्ट करके यहाँ जैसे ऐड किया था, ऐड करके डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट में किया था, इधर जस्ट ऑपोजिट हो गया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, जस्ट सी द डिफरेंस. ये समझ में आ जाएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम. तो इधर डिडक्ट करके जो डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से डिडक्ट करके उसको उसका फर्स्ट इफेक्ट किया. सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड में ले लिया. यहाँ क्या लिया था? एसेट साइड लायबिलिटी साइड में लिया था बैलेंस शीट का. सो नाउ वी विल जस्ट वर्क आउट वन एग्जांपल सो दैट इट विल बी क्लियर. नाउ third point is prepaid expenses. Prepaid expenses. Any expenditure paid in advance. Expenditure is not incurred but paid in advance. That is called a prepaid expenses. I hope you it is clear. You understand this. समझ में आया होगा सबको. Now prepaid expenses. See, उसके एग्जाम्पल हम बताएंगे. एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंप्यूटर्स एंड आईटी सिस्टम. पूरा आईटी सिस्टम का जो सर्वर रहता है या कंप्यूटर्स रहते हैं या मशीनरी रहता है या लिफ्ट रहता है, कुछ भी रहता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं. ओके, तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ. या फॉर और वी कैन से दैट मीन्स इट इज वी कैन से इंश्योरेंस है, जो स्टॉक का या बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस करता है, इंश्योरेंस रहता है ना, इंश्योरेंस लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल करोड़ों रुपए का जो स्टॉक रहेगा उसमें फायर हो गया या लॉस हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होता है और नुकसान होता है. तो व्हाट द कंपनीज विल डू, या ऑर्गेनाइज बिजनेस क्या करेगा, उसको एक जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज को देके वो सिक्योर कर देते हैं. इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ फायर हो गया या कुछ भी हो गया तो दे कैन क्लेम दैट देयर वैल्यू जितना भी जो उसके बेसिस पे उसने जो कंपनी ने जो इंश्योरेंस कंपनीज को जो सम एश्योर्ड में जो प्रीमियम भरा है जो स्टॉक के हिसाब से, वो स्टॉक के हिसाब से जो क्लेम कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर. ऐसा वो भी एक तो दैट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड. और एनी तो उसमें भी मीन्स हम लोग समझो इन बिटवीन पेमेंट किया है, इन बिटवीन इंश्योरेंस ही ले लेगा इंस्टेड ऑफ गिविंग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. वो भी ऐसा भी वर्कआउट कर सकता है, मीन्स इन बिटवीन अगर कुछ पेमेंट किया तो. सो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर कितना होता है? फाइनेंशियल ईयर इज 12 months. Here 1st April to 31st March. ठीक है. So now ओके, तो ये जो पेमेंट होगा किसका? जो इंश्योरेंस का देखो, इंडियन SURN, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग स्टॉक और एनी एसेट्स. स्टॉक भी हो सकता है, एसेट्स भी होता है, एनी एसेट्स बिल्डिंग भी का भी इंश्योरेंस करता है. ठीक है. मेक एवरी ईयर मीन्स जनरल इंश्योरेंस ऑलवेज एनुअली मीन्स एवरी ईयर उसको देना पड़ता है. जस्ट 12 months का होता है एक जनरल इंश्योरेंस का. कोई भी मीन्स फायर इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगा या थेफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगा या कुछ भी रहेगा, व्हीकल का रहेगा या मीन्स इसका एसेट्स का जो कंप्यूटर्स का रहेगा या मशीनरीज का रहेगा इंश्योरेंस, और बिल्डिंग का रहेगा, स्टॉक का रहेगा मीन्स जो स्टॉक ऑफ मटेरियल्स का जो होगा
ये सबका जो होता है इंश्योरेंस जो होता है दैट इज 1 ईयर का इंश्योरेंस देता है। तो इंश्योरेंस ऑफ एक स्टॉक, या नहीं तो फॉर एग्जांपल वी कैन शेक मशीनरी और बिल्डिंग, समझो BUILD बिल्डिंग वट एवर इट इज, एनी मशीनरी होगा या नहीं तो या ऑल टुगेदर जो भी होगा, इंश्योरेंस पेमेंट किया समझो 1.5 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, ठीक है। सो दिस इज पेड ऑन uh, 30th September 2021. Okay, so accounting year start किया 30%। this is for example है, मीन्स I'm just telling you अभी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का भी जो अभी जो चालू जो अकाउंटिंग जो होगा फर्स्ट, अभी दिस करंट अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, ये जो करंट ईयर जो चल रहा है। So I'm just giving you for an example only। तो ये जो पेमेंट हो गया है paid on 30th January September 2021 with effect on means जो हो गया इट्स अदरवाइज 0110 1 अक्टूबर 2021 को ये जो पेमेंट किया है। ओके, सो नाउ ये जो ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर पीरियड में कितना हो गया, ये 1 अक्टूबर टू 31 मार्च तक कितना है, 6 मंथ्स है, राइट 6 मंथ्स। सो नाउ ये टोटल कितना किया है, दिस इज पेड फॉर 1 ईयर, पेड फॉर 1 ईयर। वन ईयर 12 मंथ्स का, ठीक है 12 मंथ्स का पेमेंट किया है, लेकिन पेमेंट किया है कभी 1 अक्टूबर 31 2021। तो 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर टू 31 मार्च तक 6 मंथ्स होते हैं। तो लेकिन टोटल 1 ईयर के लिए हम लोग ने 1,50,000 लेते हैं। तो कैन वी टेक द टोटल फुल 1,50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? It can be taken? No, we cannot take, because here the effect should be given for 6 months only. The amount should be taken for only 6 months, and the 6 months it will be taken from so the 31st March तक 6 है। Now ये जो बैलेंस जो उसका जो हाफ है, that means 75,000 is pertaining to this current year। For current year it is current year 6 months, and next year that is 1st April to 30th September 2022 is 75,000। okay, so this is for next accounting year 2022 2023, right? This is accounting year 2021-22, okay, accounting year 2021, accounting year, same way, accounting year means a financial year, okay। So this is so now just see now how the effects will be given। Let's see, first the effect will be this you understood now, the prepaid expenses में से जो total जो 1,50,000 we have paid वो for 1 year, and that is paid on 1st October 2021। तो 1st October 2021 को ये जो पेमेंट किया है,
ये टाइम में इंश्योरेंस लिया है, समझो ये तारीख को इंश्योरेंस किया और ये इंश्योरेंस प्रीमियम भरा। तो ये जो उसके बाद में जो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो उसके जो हाफ जो होता है वो प्रोरेटा बेसिस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल इन बिटवीन भी करते हैं तो प्रोरेटा बेसिस, लेकिन मैंने थोड़ा एक आपको जो समझने के लिए, स्टूडेंट्स को समझने के लिए थोड़ा सिंपल वे में बता रहा हूँ। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च तक 6 मंथ का होता है। फॉर करंट ईयर 6 मंथ का जो एक्सपेंडिचर लेना चाहिए, ये जो पेमेंट किया है उसमें से, तो उसका हाफ जो है 75,000, दैट इज फॉर अकाउंटिंग ईयर 21-22। देन जो बैलेंस जो 75,000 है वो नेक्स्ट ईयर का है, वो एडवांस पेमेंट हो गया है, बट द एक्सपेंडिचर is not incurred in this year. This is incurred for the next, for this second expenditure belongs to next year. That means next year is 1st April 2022 to 31st March 2023। तो उसमें नेक्स्ट 6 मंथ्स का होता है, नेक्स्ट 6 मंथ्स का ये जो करंट ये जो पेमेंट है एडवांस पेमेंट है, तो उसका जो ये जो इफेक्ट को हम लोग को देने का है लाइक दिस। आई विल शो यू। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस चार्जेस और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, whatever it is, insurance premium paid, insurance paid 1,50,000 and less prepaid insurance or prepaid expenses। prepaid expenses कितना है, उसका कितना है 75,000, राइट। सो नाउ कितना कैरी फॉरवर्ड करेगा उसका जो करंट ईयर का माइनस दिस, तो 75,000। so you understood this? To insurance, okay, now this is the now this is a first effect, one effect is given here, right? So now second effect will be given here in the asset side, current assets में prepaid expense और prepaid insurance, तो क्लियर होने के लिए, अदरवाइज प्रीपेड एक्सपेंसेस का पूरा एक लिस्ट बना के मीन से बहुत सारा रहेगा। फॉर एग्जांपल मशीनरी का मेंटेनेंस का होगा, या कुछ बिल्डिंग मेंटेनेंस होगा, लिफ्ट मेंटेनेंस होगा, और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होता है, और मेनी मेनी अदर एक्सपेंसेस हम लोग प्रीपेड में बहुत सारा इसको एडवांस में जो होता है ना, एक्सपेंडिचर को जो एडवांस में पेमेंट करता है, अगर ज़्यादा रहेगा तो उसका एक लिस्ट बना के इसको टोटल प्रीपेड एक्सपेंसेस करके ले सकते हैं। 1 और 2 रहेगा तो ऐसा मीन्स ये जो एक्सपेंडिचर जो क्लियर होने के लिए, मीन्स ये क्या किसके लिए प्रीपेड किया है, तो यहाँ से इमीडिएटली मालूम पड़ेगा ये इंश्योरेंस के लिए प्रीपेड किया है करके, तो इसके लिए ऐसा लिखता है। अदरवाइज इफ इट इज देयर आर सो मेनी मीन्स मल्टीपल मीन्स मोर देन मीन्स, और बहुत सारा ऐसा ये रहेगा, तो एक लिस्ट बना के इसका कॉमन हेड करेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस करके। अदरवाइज इफ इट इज 1 और 2 टेक इट डायरेक्टली मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड मेंटेनेंस, लाइक दैट प्रीपेड लिफ्ट मेंटेनेंस और प्रीपेड बिल्डिंग मेंटेनेंस, व्हाटएवर इट इज, अब तो उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो ये जो इधर कहाँ कहाँ ले लेगा, एसेट साइड में 75,000 इधर ले लेगा प्रीपेड। तो जस्ट सी दिस, ये जो 75,000 का जो एंट्री जो है, इसका फर्स्ट इफेक्ट हम लोग ने इधर प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें से डिडक्ट करके, जो टोटल जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें से डिडक्ट करके ये जो जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो बैलेंस शीट में इधर एसेट साइड में ले लिया। लेट्स सी दैट एंट्री deduct from the particular expense on the debit side of the trading and profit and loss account, deduct किया, ओके, लेस डिडक्ट किया है, एंड देन बैलेंस शीट एसेट साइड में ले लिया, ठीक है, बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक, द बैलेंस शीट एसेट साइड इज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पॉइंट। Fourth point is income received in advance. This is pre-received income. Advance. Pre-received income. Income received in advance or pre-received income. So deduct from the particular income on the credit side of the profit and loss account, and then the second effect will be given balance sheet liability side.
इनकम रिसीव्ड एडवांस बोलेगा तो क्या है, इनकम एक्चुअल में वो पर्टिकुलर ईयर का नहीं है, तो वो दैट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। लेकिन हम लोग को अभी हम लोग ने प्रीपेड एक्सपेंसेस जो बोला है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कंपनी ए, कंपनी समझो ए बी सी कंपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो समझने के लिए बता रहा हूँ, कंपनी ए बी सी कंपनी प्रीपेड expenses give prepaid expenses ABC company gave prepaid expenses 50,000 to to XYZ company, XYZ company. Okay. So now, what I'm telling you, just see, for this company, ABC company, for ABC company, it is prepaid. Okay. So this is prepaid. Okay, prepaid 50,000 हो गया. Okay. Whereas XYZ company को क्या हो गया? XYZ company को क्या हो गया? This is received income, right? For XYZ ABC company, it is a prepaid expense. Okay, prepaid expense. Whereas pre received income हो गया, ठीक है? So that is thing. So इसको इधर एक्सपेंडिचर हो गया, ये जो कंपनी इसको जो एक्सपेंडिचर जो पेमेंट करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस देते हैं, वो सामने वाला कंपनी को जो जिसको देते हैं, वो कंपनी को वो प्री रिसीव्ड इनकम हो गया, राइट? हो गया ना? तो मीन्स यहाँ इनकम, यहाँ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर नॉट इनकर्ड, लेकिन पेड इन एडवांस, यहाँ इनकम हुआ नहीं है बट रिसीव्ड इन एडवांस। डिफरेंस मालूम पड़ गया ना? Here it is expenditure not yet but paid in advance, whereas here income not earned but received in advance. गुड. इनकम एक्चुअल में हुआ नहीं है लेकिन उसका सामने पेमेंट आ चुका है, तो हम लोग को एक एडवांस पेमेंट आ चुका है, दैट इज अगेंस्ट सम इनकम, कुछ इनकम के लिए, जो कुछ रेवेन्यू के लिए एडवांस में आ गया है, बट दैट इफेक्ट दैट एक्चुअल ट्रांजैक्शन और एक्चुअल डील मींस सेल होगा या नहीं तो कुछ सर्विस होगा, लाइक मींस इंश्योरेंस बोला या नहीं तो मेंटेनेंस हो गया या कुछ भी हो गया, उसका एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम हुआ नहीं है लेकिन एडवांस में आ गया है। यहाँ एक्सपेंडिचर हुआ नहीं है लेकिन एडवांस में पेमेंट कर दिया है, सो दैट इज अ डिफरेंस। सो डिफरेंस को समझने का, सो नाउ जैसे सी फॉर एग्जांपल अभी ये समझो एक 50,000 समझो, अभी उधर 50,000 लिया है तो 50,000
तो ये जो 50,000 अभी सेम हम लोग ने ऐसा ही बोल देते हैं, ठीक है। ये एग्जाम हम लोग ले लेते हैं, तो इट विल बी क्लियर फॉर एग्जाम, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा सब। तो इसके लिए मैं उसको वही एग्जाम्पल लेता हूँ, खाली फिगर्स अमाउंट को थोड़ा ये किया है, ठीक है। रिसीव्ड इंस्टेड ऑफ रिसीव्ड, रिसीव्ड ऑन, रिसीव्ड फॉर 1 ईयर समझो, रिसीव्ड रिसीव्ड ऑन 1 अक्टूबर 2021 समझो। तो ये फॉर ये जो हो गया था 1 अप्रैल से ये 30% मजबूत, उसका 50% कितना है, 25,000 ये पर्टिकुलर ईयर का है, 25,000 ये साल का है समझो, 6 मंथ का। तो उनको क्या करना पड़ेगा, अभी नेक्स्ट ईयर में उसको कितना कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो मेंटेनेंस समझो, मेंटेनेंस समझो, उसके लिए जो मिला है एडवांस में मिला है ये सब प्री रिसीव्ड इनकम, तो सर्विस रहेगा, तो समझो उसका जो आ गया है, या किसी के लिए भी कुछ एडवांस पेमेंट आ गया है, या 1 ईयर का पूरा पेमेंट आ चुका है, इसका है वो 50,000 है टोटल। 50,000 में से क्या किया, 25,000 दिस पर्टिकुलर करंट ईयर का है, 25,000 नेक्स्ट ईयर का है, ये जो इनकम पेमेंट आ चुका है, दिस इज फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, मीन्स नेक्स्ट ईयर। तो उसको इफेक्ट कैसा लेगा, सी ये जो प्रीपेड एक्सपेंस और प्री रिसीव्ड इनकम जस्ट समझ लो क्या है करके, ठीक है। तो जस्ट उसका इफेक्ट बता रहा हूँ, हियर मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया कर चुका है, दिस वन इज ऑलरेडी एक्सप्लेन हियर। सो नाउ जस्ट सी हाउ द एंट्री इफेक्ट इज गिवन। सो प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम, सेम वे मीन्स इसको जो किया था, इसको ये किया था वैसा, इनकम फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, असेट्स लायबिलिटी साइड में ले लेंगे, so टू इफेक्ट। so now I will show you what is the effect given. So now in the profit and loss account में is the credit side, it is an income, so here the GP आएगा by GP here by income received in advance, for example any matter it is, we will write that pre income, okay, by maintenance income, maintenance income होगा less income। तो कितना होता है, ये होता है फॉर एग्जाम्पल 50,000 लेस 25,000, तो क्या होता है इफेक्ट माइनस, तो करंट ईयर में कितना हो गया 25,000, ईयर कितना हो गया, 1,50,000 पेमेंट किया था, 75,000 प्री रिसीव्ड था, एक्सपेंडिचर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है 75,000, ईयर टोटल इनकम कितना है बाई जो 50,000 है, उसमें प्री रिसीव्ड कितना है 25,000, द एक्चुअल ये पर्टिकुलर ईयर के लिए कितना है 25,000। तो ये इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है, फर्स्ट एक इफेक्ट इधर दे दिया, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड में प्री रिसीव्ड इनकम या प्री रिसीव्ड मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस रिसीव्ड इन एडवांस, या प्री रिसीव्ड इनकम और मेंटेनेंस
इन एडवांस कितना है 25,000। ओके, सो द इफेक्ट, आपको इफेक्ट समझ में आया होगा। तो दो इफेक्ट दे दिया है इसका। वन, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो भी इस जो उसका जो है उसमें से टोटल में से उसकी जो प्रीपेड प्री रिसीव्ड कितना है उसको माइनस किया, और वो जो इफेक्ट है सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी साइड में दे दिया। जस्ट सी income deduct from the particular income on the credit side of the profit and loss account, credit side of the profit and loss account, sorry, credit side of the profit and loss account. This is a credit side of the profit and loss account. And second effect, uh, balance sheet liability side, balance sheet liability side, balance sheet liability side. This is the liability side. Okay, so now I think it is clear. 4 points हो गया. Now let us see. Fifth point क्या है? Income receivable. Add to the particular income on the credit side of the profit and loss account and the balance sheet asset side. Fifth point is income receivable. Income receivable means क्या है? Income earn किया है, income earned but not received. मिलने वाला है। इनकम ऑलरेडी जो रेवेन्यू जनरेट हो गया, मतलब इनकम अर्न किया है, लेकिन वो हम लोग को मिला नहीं है, वो मिलेगा बाद में। तो जो इनकम जो मिलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट समझो, बैंक में हम लोग ने एफडी डाला है, बैंक एफडी फिक्स डिपॉजिट, उसका जो एक समझो एक फिक्स डिपॉजिट एक 1 करोड़ का समझो, 1 करोड़ का एक एफडी डाला है, तो उसका जो इनकम है उसका होगा 65,000, 6.5% का रेट से, एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम। ठीक है, एक एफडी डाला है तो उसका इनकम, बट ये जो एफडी डाला है, एफडी का मैच्योरिटी अगर 5 साल के बाद में तो 5 ईयर के लिए है, यानी तो 3 ईयर्स के लिए है। ठीक है, तो जो होगा जो 3 ईयर्स के बाद में ही मिलेगा। तो ये जो एफडी का जो ये इनकम है वो एफडी के साथ में इधर ऐड हो जाता है, राइट। तो लेकिन हम लोग का जो करंट ईयर में जो लेने का है, जो जब भी एफडी मैच्योर होगा तभी ये सब साथ में मिलेगा। अपने को तो अकाउंट में ये क्रेडिट किया नहीं है बैंक अकाउंट में, तो ये जो इनकम रेवेन्यू जनरेट हो गया है ऑलरेडी, बट इट इज अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, वो है वो टाइप का इनकम। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? add to the particular income on the credit side of the profit and loss account and the balance sheet asset side. Add to the credit side, कोई भी इनकम होगा जो क्रेडिट साइड मीन्स मतलब इनकम समझो इंटरेस्ट करके, इंटरेस्ट कुछ अलग से कुछ आया, समझो इंटरेस्ट कुछ आया है, बैंक इंटरेस्ट कुछ भी आ गया है, समझो 50,000 आ गया है समझो, और उसमें ये जो एफडी इंटरेस्ट जो है एड interest received already, interest receivable, the interest receivable, that will be better, interest receivable. Okay, so that is, or we can say that income receivable, like that it is. So ये कितना है? What is this? We have just calculated here. It is 65,000. ठीक है, so here we have taken 65,000 add किया, so 65,000 add किया है, so total कितना है? So now this second effect ये कहाँ ले लेगा? This is credited to the profit and loss account, and the second effect will be given here, income or we can say FD interest receivable,
ये भी ले सकते हैं, या नहीं तो समझो क्या करेगा, वो 1 करोड़ का एफडी है, तो समझो एफ डी आर 1 करोड़ है समझो, और इनकम रिसीवेबल कितना है 65,000, तो टोटल कितना हो गया 1 crore 65,000. So this is the thing. So first इफेक्ट कहाँ लिया है हम लोग ने, क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लिया. सेकंड इफेक्ट किधर दिया है, इधर बैलेंस शीट में असेट साइड में लिया है. I think you understood this. This is very clear, no? This is too much explanation is given. Add to the particular income on the credit side of the profit and loss account. Added here. ठीक है. Then second effect, balance sheet, asset side. Balance sheet, asset side. So given to the balance sheet, asset side we have given. Okay. Now I think you understood all this thing. Up to 5 points we have already discussed. Save this for your future reference. Okay. So let us conclude this now, because if we take more this thing, then it will be difficult to understand. So let us see. No, no, regular. I request all my students to study regularly. If you don't understand, watch again and again, because I want my students to score full marks in the subject or just close to 100% mark. Most important, you all must make a strong base in the subject that decides your career. We will stop at this class here, because we cannot stretch it too much, because that if I take more time, it will bounce on your head. And I have explained as much as possible to understand. It's simple. Uh, Now please read again and again, learn and practice to achieve your life's goal. My message to all: help each other to grow together for a better India. सब आपस में help करके, मतलब जिसको जिसको जो मालूम है उसको share करते जाओ. Request you all to share the video to reach more and more people, so that many students and public can take the benefit. जितना स्टूडेंट्स के, फॉर एग्जांपल करस्पॉन्डेंट स्टूडेंट्स हो, एजुकेशन स्टूडेंट्स होगा, डिजिटल एजुकेशन स्टूडेंट्स होगा, मेनी अदर स्टूडेंट्स एंड दो स्टूडेंट्स को नॉट may not be able to afford private tuition classes, or any means anybody want to learn means class this subject, they can just if this particular type of knowledge video means I'm uploading on my YouTube channel, so they can just get subscribe, and then they can learn that. Okay, please subscribe my class, this channel, and watch and take the benefit, score 100% mark or the maximum. Thank you for your attention.